Hey guys, आज का हमारा टॉपिक है definitions. To understand standards on auditing properly, you need to understand few definitions. So let us move forward. What is financial statements? Financial statements क्या है? It is a structured representation of financial information so as to communicate user about its state of its affairs at a given point of time. State of its affairs मतलब क्या? मतलब financial position, that is balance sheet of the entity, earnings, that is profit and loss statement of the entity at a given point of time means as on a particular date, that is as on 31st March, the year end or any period end, by using financial reporting framework. So now question is, what is financial reporting framework? गाइस वी प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. जो हम ऑडिट रिपोर्ट बनाते हैं बैलेंस शीट P&L अपने क्लाइंट की, उसे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं. वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम कैसे बनाते हैं? बाय यूजिंग फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क. व्हाट इज फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क is used by management or those charged with governance. Guys, आपको याद होगा, I have told you in first lecture that preparation and presentation of financial statements is the responsibility of management. बराबर? वो बात अलग है कि ऑडिट पे हम ऑडिटर्स ही बैलेंस शीट और P&L प्रिपेयर करते हैं, बट primarily it is the responsibility of the management. So management or those charged with governance use the financial reporting framework to prepare financial statements. To prepare financial statements. So now one more question arises, what is this those charged with governance? These are at par with management but on a higher side, means those persons who are responsible to give strategic direction to the entity and are also accountable for and responsible for this direction. Okay, so framework are of two types. One is the need based and object base of the financial reporting, and other is as required by the statute governing the entity. Means based on the need and objective, it's like for example schools, societies, trust, उनकी नीड एंड ऑब्जेक्टिव के हिसाब से उनका अलग ही फॉर्मेट होता है बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस. फॉर एग्जांपल ट्रस्ट के लिए इट इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, एंड ट्रस्ट के बैलेंस शीट में होगा फंड ऑफ द ट्रस्ट, कॉर्पस फंड. उनका पर्पस अलग होता है यूज करने के लिए, और यूजर्स ऑफ दो स्टेटमेंट्स भी अलग होते हैं अपार्ट फ्रॉम कंपनीज. व्हाट डू मीन बाय द स्टैट्यूट गवर्निंग द एंटिटी, और स्टैट्यूट फ्रेमवर्क कैसे देते हैं? स्टैट्यूट में यानी कंपनीज को कंपनीज एक्ट अप्लाई होता है, और कंपनीज एक्ट मेंशंस गिव्स शेड्यूल 3. एज पर शेड्यूल 3 कंपनी को अपनी बैलेंस शीट, स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपेयर करनी होती है, और कंपनीज एक्ट मैंडेट्स द कंपनीज to prepare financial statements as per accounting standards. So accounting standards also forms part of framework. In case banking sector, RBI mandates to banking sectors, उनके formats RBI के हिसाब से होते हैं. इंश्योरेंस कंपनीज की अगर बात करें तो उनके लिए IRDA की गाइडलाइंस के हिसाब से स्टेटमेंट्स बनानी होती है, तो उनके लिए वो फ्रेमवर्क हो गया. मीन्स उनकी इंश्योरेंस क्लेम्स प्रोविजन करना, प्रीमियम इनकम बुक करने की रिक्वायरमेंट्स होती है, तो वो उनको फॉलो करनी होती है. दैट इज देयर फ्रेमवर्क, कंपनी फ्रेमवर्क. सो दिस इज द फ्रेमवर्क. बाय यूजिंग दिस फ्रेमवर्क वी प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. सो गाइस, व्हेन FRF is complied with in all respects, मतलब फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के जो भी रिक्वायरमेंट्स है, in all respects we comply with while preparing and presenting financial statements, then at that time we can conclude that financial statements are giving true and fair view. Guys, what do you mean by true and fair view? When we achieve true and fair view, at that time we can say that financial statements are free from material misstatements. So now, what do you mean by misstatement? So we'll move towards the meaning of misstatement. Misstatement is a difference in a difference in amount, classification, presentation, disclosure. What do you mean by classification? Yani the capital part or revenue part we differentiate in our preparation of financial statements. Presentation is current or non-current assets. Disclosures are notes to the financial statements, or as per accounting standards we have to report, to disclose few things, or based on our professional judgment
we have to disclose in our audit report or notes to the financial statements. Just like last year we have to report on demonetization. So those are disclosures. If there is any difference in this disclosures or presentation or classification or amount as used by entity, मतलब actuals actually जो entity ने किया है, or as required by FRF, companies law या any law या IRDA requirement for insurance companies और RBI requirement for banking companies, law requirement कुछ और थी और कंपनी ने या एंटिटी ने कुछ और किया, तो वो डिफरेंस हो गया, उसे कहते हैं मिसस्टेटमेंट. So this was it. Thank you.